how are you all? I hope you are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 2, that is personalizing window in 11. So how to personalize window 11? So let's begin with this lesson. In this lesson we are going to study about personalize recent activities, then how to change themes, then productivity features, pinning apps to start, कैसे pin करते हैं apps को start पे, customizing desktop items. Next, we are going to study entertaining on the go. And the last one is how to change background. So here, Windows 11 has a new look and feel compared to other versions. इसमें एक न्यू लुक होता है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं अदर वर्जन से, विंडो वर्जन से. आफ्टर इंस्टॉलिंग विंडो 11, द फर्स्ट थिंग वी विल प्रोबेबली नोटिस इज अ चेंज टू द टास्क बार. सबसे पहले हमें उसमें चेंज दिखेगा, हमारे टास्क बार के चेंज दिखेगा. देयर इज अ बंच ऑफ न्यू आइकन्स, तो बहुत सारे न्यू आइकन्स है. ऑल मूव टू द मिडल, जो कहाँ पे मूव हो गया, मिडल में. दीज अपफ्रंट चेंजेस आर जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग. स्टार्ट मेन्यू इज द सेंटर ऑफ दोस चेंजेस. स्टार्ट मेन्यू के जो सेंटर उन चेंजेस का, एज इट नाउ लिव्स इन द मिडल ऑन द स्क्रीन. वो कहाँ पे मिडल ऑफ द स्क्रीन को होता है. On Windows 11, we can alter various settings. So हम alter कर सकते हैं बहुत सारी settings to change the design of the desktop and other aspects to make the experience more personal or fast. Refresh the field to avoid seeing the same work every day. Microsoft Facts folder. Microsoft confirmed a month earlier about the releasing of Windows 11. However, it was officially released on 5 October 2021. कब रिलीज हुई थी आपकी विंडो 11? 5 अक्टूबर 2021 में रिलीज हुई थी. इन्होंने पहले ही बता दिया था 1 month earlier about the releasing of Windows 11. So now let's talk about personalized recent activities. कैसे personalize कर लेते हैं अपने recent activities को. On Windows 11, the start menu is an essential component to launch app. ये essential component है start menu launch apps के लिए. And find virtually anything on the computer. हम virtually find कर सकते हैं कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे apps को include करके settings को and files को. One of the new features of the Windows 11 start menu is the recommended section. Main feature क्या है? Recommended sections है. The section shows our recently added apps. इस recently added apps को show करता है. As soon as our recently opened items, we can personalize the look of our start menu. हम पर्सनलाइज कर सकते हैं लोग अपने स्टार्ट मेन्यू का बाय टर्निंग दीज ऑन और ऑफ, उनको ऑन और ऑफ टर्न करके. तो फॉलो द स्टेप्स टू कस्टमाइज स्टार्ट मेन्यू. कैसे कस्टमाइज करते हैं? फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फॉलो इज यू हैव टू ओपन सेटिंग फ्रॉम द पिन सेक्शन इन द स्टार्ट मेन्यू. आपको सेटिंग्स को ओपन करना है जो पिन सेक्शन में आपके स्टार्ट मेन्यू पे. देन यू हैव टू क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन. आपको पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है. देन क्लिक द स्टार्ट पेज ऑन द राइट साइड. स्टार्ट पेज जो राइट साइड में उस पर क्लिक करना है. आफ्टर दैट fourth step, you have to turn on off the show recently apps toggle switch. इस पे turn on करना है आपको. Then you have to turn on or off the show most used apps. Turn on या off करना है most used apps को, toggle switch को on या off करना है. Then step 6, then turn on or off the show recently open items in start, jump list and file explorer toggle switch. इसको turn या on या off करना है आपको. Enabling the recently added or most viewed apps option. The start menu will show these items in the recommended section. जो start menu क्या show करेगा इन items को recommended sections में and all apps list में. Now pinning apps to start. कैसे pin को apps को pin कर देगा start के लिए. The pin apps area on the start menu can be increased. जिसको हम increase कर सकते हैं with recently built. By default, the pin and recommended section display in 3 rows. ये display करता है 3 rows में. When we increase the app section, a 4th row will be added. जब increase करता है app section को जो 4th row होता है वो add हो जाता है, allowing us to pin more apps. जिससे हम जो हमें allow करता है pin करने के लिए more apps को. You have to follow the steps to organize the pin section of the start menu. The very first step is you have to click on start icon on the taskbar. Start icon पे click करना है अपने taskbar के. Then search for the name of apps in Windows search. आपको search करना name apps का Windows search में. Then you have to right click app and select the pin to start option. आपको right click करना है पे, then select करना है pin to start options पे. Right click the app from the pin screen. पिन सेक्शन आपको राइट क्लिक करना है आपको पिन सेक्शन से एंड सेलेक्ट द मूव टू टॉप ऑप्शंस टू पोजीशन है. आपको सेलेक्ट करना है मूव टू टॉप ऑप्शन को पोजीशन पे. द आइटम्स इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. जो कहाँ पे आइटम्स आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में. फैक्ट फोल्डर टू ओपन context menu, right click menu for the selected item. Use the shortcut key. आपको shortcut key को यूज करना है
odds plus F10. One can also drag the item to the desired position in the pin section. लेकिन आप desired position पे pin section में अपने icons को drag कर सकते हो. If we don't want a particular app in the pin section, अगर हमें नहीं चाहिए particular app pin section में, you have to right click the app. आपको right click करना है and select the unpin from start and or uninstall button. Changing backgrounds को कैसे change करते हैं? There are multiple ways to change the desktop wallpaper in Windows 11. बहुत सारे multiple ways है. The quickest way क्या है to make the desktop look different is by changing the background image. Quickest way है तो जो different लगता है change करिए background image को. हम background image को change कर देंगे. Configuring a slideshow or showing choosing a solid background. हम configure कर सकते हैं slideshows को या choose करते हैं solid background को. It is now possible to set a custom background. Possible हम set कर सकते हैं custom backgrounds for each virtual desktop. Follow the steps to change the background of the desktop. You have to follow some steps. The very first step you have to follow, you have to open setting from the pin section in the start menu. Settings को click करना है जो pin section में start menu पे. Before then we have to click on personalization. उसके बाद आपको personalization पे click करना है. Then आपको click करना है background option पे जो available है. यहाँ पे click करना है जो पेज में on right side available है. After that, before that you have to create one fact folder. Alternatively, right clicks on image and select the set as desktop. आपको right click करना है image पे select करना है set as desktop background options to apply the image as the new desktop background. वो apply हो जाएगी आपकी image new desktop background पे. Next step you have to under the personalize your background settings select the picture option. उसके नीचे आपको picture options को select करना है. Then click करना है आपको browse photos पे. Browse photos पे click करना है. Then you have to click choose picture button. We can select the sample background image. हम select कर लेते हैं sample background image को to choose on your desktop. Here we have the use a sample background pictures. यहाँ पर हमने sample background pictures को use करा है. Use a choose a fit for your desktop image. आप choose कर सकते हो fit, fill या sketch या कुछ भी choose कर सकते हो. Tile option भी select कर सकते हो. Select the fill option जो ensure the image covers the entire screen. Fill option को select करोगे तो इसके जो image है वो आपकी पूरी की पूरी screen को cover कर लेगी. Fit बीच में जाएगी. Tile option में भी different sizes में आ जाता है. Now how to change themes? The theme is a package that includes one or more background image. एक package होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा background images include होती हैं. Is in colors, mouse pointer, customization and sounds. Windows 11 comes with 6 default themes. Windows 11 में 6 default themes होती है with different wallpapers and settings including Windows Light, Window Dark, Glow, Sunrise and Flow. We can change the color of start menu. हम color change कर सकते हैं start menu का to suit our needs. The color change will also impact the taskbar. जो color change है वो कैसे impact करेगा taskbar को and our windows को भी impact करेगा. We have to follow the steps to change the desktop theme. The very first step you have to follow, you have to open setting from the print section. Setting में जाना है print sections में. Then you have to click on personalization. Personalization पे click करना है. Then आपको theme और page पे जाना on the right side. After that, under the theme settings, click one of the available themes. आपको एक available themes को click करना है. The theme will apply to your computer. जो आपके computer पे वो theme apply हो जाएगा. Now, customizing desktop icons. Desktop icons को कैसे customize करते हैं? Windows 11 brings along numerous UI changes. बहुत सारे UI changes लाता है. That's having welcome by user for the most part. Customize icons for individual apps, folders or shortcuts. A great feature of personalizing Windows 11. ये great feature आपके personalize करने का Windows 11 को. Hiding desktop icon. If we like a clean desktop, window allows us to hide all icons. अगर हमें clean desktop चाहिए, window allow करता है सारे icons को hide करने के लिए. So that desktop is completely clean of icons. To do so, you have to follow some steps here. To click on right click on the desktop को right click करना है desktop पे कहीं भी एक menu appear होगा आपके सामने. आपको select करना है view को, then आपको जाना है view में show desktop icons पे the options toggle desktop icons on or off. इसका toggle करके click करोगे on या off हो जाएगा. Now fact folder. Windows 11 has a centralized location for majority of its setting app. Centralized location है majority of its setting apps के लिए from system configuration to creating new users and updating Windows. All can be done from system setting pin. सब चीज़ें कहाँ से होती है? System setting pins होती है. To get the system setting, one can use window key plus one shortcut और या फिर आप click कर सकते हो start पे then settings पे. Now hiding desktop icons. कैसे hide करते हैं desktop icons को?
Window 11 allows us to add some built-in icons. वो allow करता है built-in icons को add करने के लिए to our desktop for easy access such as file explorer, control panel and recycle bin, which are used in some cases. जो use होता है हमारे कुछ cases में first आपको जाना है settings में from the print section in the start menu. Then you have to click on the personalization. Personalization पे जाना है. Then आपको select themes on the right pane of the screen as shown in the image. आपको यहाँ पे जाना है. Then on the theme setting pane, under the related settings, click करना है आपको desktop icon settings पे. Desktop icon settings को click करना है. We can choose to show the computer users file network, recycle bin and control panel on the desktop. हम choose कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने desktop पे. These icons on the desktop are useful as they help users to get essential settings quickly. ये useful होती है इसलिए हम use कर सकते हैं अपने desktop पे. इससे हम essential settings को easily बहुत जल्दी quickly कर सकते हैं. Fact folder, there are a list of shortcuts to jump to a certain icon size. We can press any of these shortcuts to ensure decide while we are on the desktop and it will immediately change the icon size. अगर हम ये shift करेंगे, press करेंगे तो ये हमारे icon size को immediately change कर देगा. These are the shortcut keyboard keys. Extra large icons के लिए Control plus Shift plus 1. Large icons के लिए Control plus Shift plus 2. Medium icons के लिए Control plus Shift plus 3. Small icons के लिए Control plus Shift plus 4. Now productivity features. What is this? The new feature in Windows 11 are catered towards productivity. So the lists include a redesigned file explorer, a new snap layout and a snap group features. In more ways than one, these features are a step up from the snap assist counterparts in Windows 10, ensuring that we can get the most work done. ये ensure करता है कि हम बहुत सारे work को कर सकते हैं. Have a look at the new productivity features of latest OS. Microsoft tweak the notification center and reduce the quick setting panels. Tweak करें notification center को और क्या कर रहा है quick setting panel को introduce कर दिया. There is a separate space. एक separate space आपकी notification के लिए change that matters as it makes these area more useful. There is a sliders for more the brightness, both the brightness and the volume. Sliders है brightness और volume के लिए आपके PC पे. The volume slider has a pop-up menu. Pop-up menu volume sliders में. And let us pick out our output. So pick our output source. Even the Wi-Fi setting option has a pop-up menu. Wi-Fi setting options very pop-up menu है. So let us pick a Wi-Fi network directly from quick settings. We can even see the calendar वहाँ पे हमें calendar भी देखने को मिलता है. So our control notification setting directly from the notification center itself. During a busy day, these tweaks make a huge time-saving difference. Busy day में जो क्या होता है ये जो tweaks होते हैं huge time-saving things to difference करते हैं. It's now much easier to control settings on PC without having to wonder where we need to go. Or run a search in the start menu or visit a setting app. Window widgets allow us to have useful mini apps. ये allow करता है mini apps के लिए. और our desktop widgets are very reminiscent of old like tiles from Windows 10. Hit window key plus W or swipe from left of the screen and we get a new space. हमें एक new space मिलता है to find the information at a glance. There is no need to go to the web browser. कोई नहीं है web browser पे जाने के लिए. Pick up our phone window. Widgets will allow us to get a snapshot. ये हमें allow करेगा snapshots के लिए of our schedules, task list, email and a whole lot more. We can also view relevant news. हम relevant news देख सकते हैं, stories, contents and more straight from our desktop in the notification pane. Windows 11 users can start using chat from Microsoft Teams. हम chat install कर सकते हैं Microsoft Teams से. On window, it is a signature lightweight experience. Signature lightweight experience brought करा right to the taskbar to let Teams personal account users quickly start a video call. आप quickly video call कर सकते हो और chat कर सकते हो अपने friends and family से. Chat from Microsoft Teams is installed and pinned to the taskbar. ये install है pinned है आपके taskbar पे Windows 11 startup पे. As for chat apps, it is a quick and easy way to stay in touch. A quick और easy way stay in touch में रहने के लिए family and friends से. Powered by the personal versions of Microsoft Teams, we can start video calls. हम video calls कर सकते हैं, friend files send कर सकते हैं, share कर सकते हैं media. Microsoft even allows to chat with people. ये हमें allow करता है chat करने के लिए people who don't have Teams. But Teams नहीं है, SMS release है with our message telling them to download the app. Now entertainment on the go. Microsoft worked hard and make it store a
respectable place to the PC games. उन्होंने respectable place दिया है to find PC game. Microsoft integrated an Xbox Game Pass for the Windows PC so as the users can download any title directly. Users क्या कर सकते हैं, download कर सकते हैं किसी भी title को directly. The Game Pass is available at a low monthly subscription. किस पे available? बहुत ही कम low monthly subscription fees पे available है. Users can buy games at discount and keep them in their library. Users games buy कर सकते हैं discount पे अपनी library में रख सकते हैं. Windows 11 is an operating system. ये operating system है that not only ensures us to get work done by that to relax and wind down too. It has been redesigned from the bottom up. Redesigned the bottom up so discovering apps is easier. App listing are clear to understand and updating apps is now a simple process. Update करना apps को ये भी एक simple process हो चुका है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.